optics. रे ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू spherical surface. Now there can be two types of spherical surface, namely concave and convex. If I talk about a lens system, then basically lens looks somewhat like this, right? This we call it as double convex lens. So double convex lens is actually made up of two different surfaces, namely convex if I consider this part and concave if I consider this part. Why? Because if I keep object somewhere here, then what happens is ray coming from object first gets incident on the first part, which is convex. Then obviously ray is going to bend. The image which is formed is within the lens system because of the first surface. The image which is formed is somewhere here, obviously on the principal axis, and the same image acts as the object for the second surface, and final image is formed behind the lens, right? So the thing is, for this particular lens, two times refraction is taking place. First, refraction is taking place on the first surface, that is convex, and secondly it is happening on the concave side. So as per the topic, we are required to study this lens system with each surfaces as separate. Like first we will be considering this surface. We will see what happens, how image is formed, and we will try to find out the relationship between object distance, image distance, radius of curvature and all. Then we are going to study this part, the same thing we are going to do as we did it before, and finally we are going to add both the expressions which will give you lens maker's formula, and for examination that is very very important, right? हम क्या करेंगे यहाँ पे, कोई एक सरफेस पहले अज्यूम करेंगे, like I am going to assume this surface. Okay, this side I am considering that the side is glass side and this is air side. That means the medium out here is rarer, having a refractive index mu1, and this side the medium is denser, refractive index mu2. Here mu2 is greater than mu1, right? So we are going to derive relationship between mu1, mu2, object distance, image distance, radius of curvature when object is kept at rarer side. So I am going to keep object at rarer side, and we will restrict ourselves with the size of object, and the size of object should be very very small. We call it point sized object, right? So the formula which we are going to derive holds only for point sized objects. So this dot is the position of object O. Obviously this is a convex surface as well as concave also. If I keep object here, surface appears concave, and if I keep object here, surface appears convex, right? But this surface has its radius of curvature, center of curvature somewhere here, C. So from this I can draw normal. Now from this object a ray is sent. Mind it, this angle is very very small. This angle is very very small because the size is point sized. Okay.
but for sake of understanding we are taking a bigger angle, otherwise diagram will not appear good, right? So we consider this angle to be alpha. Now first refraction will take place due to this surface, and the ray is going from rarer to denser medium, so the ray is going to bend towards the normal. So this dotted line represents normal, so this is bending towards the normal. And one ray I assume somewhere here, so this, if it passes through pole, then it will go undeviated, and if it goes undeviated, then here both the rays are meeting, we get here image. We call this angle gamma and this angle as beta. Then this angle will be angle of incidence I, this angle will be angle of refraction R. We are assuming one more thing, that is the aperture of this surface is smaller, so that if I drop a perpendicular here, then this perpendicular point, this point is lying very close to this. Perpendicular point M lies very close to, let's say, P. So here I can write M is very close to P as angles are smaller. So these are the restrictions, these are the conditions under which we are going to derive the relationship, and this is the ray diagram which you should understand. Okay, so let's derive the formula. Formula derive करने के लिए we are going to consider two triangles, and the triangle जो होगा that will be triangle OCN. In triangle OCN, I can write angle alpha plus angle gamma is angle I. That is sum of two interior angle wala property, and that is angle alpha plus angle gamma is angle I. That is sum of two interior angles is exterior. ये प्रॉपर्टी, अब ये एंगल वाला नोटेशन हटा देते हैं, अल्फा प्लस गामा इज आई, इक्वेशन 1। अब एक और ट्राइंगल चूज करेंगे, वो ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल NCI, ट्राइंगल NCI। यहाँ पे मिलेगा हमें एंगल R, एंगल बीटा इज एंगल गामा, तो यहाँ पे R मिलेगा गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें मिलेगा साइन आई by sin R is refractive index of 2 by 1. So here we get refractive index of 2 by 1. Since the angles are very small, smaller, so sin I will change to I and sin R will change to R, which gives us mu2 by mu1. From equations 1 and 2, we can replace the value of I and R. So on replacing, we get from 1, 2 and 3, we get, what is I? I is nothing but alpha plus gamma. What is R? R is nothing but gamma minus beta is mu2 over mu1. Just simplification. On simplification we get mu1 alpha plus gamma is mu2 gamma minus beta. Now next is, let us call it equation number 4.
triangles OMN, triangle MNC and triangle MNI. Now, in these triangles, tan alpha will be alpha as the angles are very smaller. Tan alpha is alpha and that is equals to perpendicular, that is NM by MO. Tan beta is simply beta because angles are smaller. We get NM by MI. Now triangles tan beta then tan gamma is gamma. This is NM by MC. Now since M is very close to P, so I can write NM by, instead of MO, I can write PO. Instead of MI, I can write PI. Instead of MC, I can write PC. So these are the values which we get. These set of equation, if I consider equation 5, then from equation 5 and 4, what we get? We get mu1. Instead of alpha, I can write NM by PO plus gamma हो जाएगा NM by PC and mu2 ये हो जाएगा NM by PC minus NM by beta हो जाएगा ये. Now थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, इसको रब करते हैं. अब इससे कंटिन्यू करेंगे. NM 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 कैंसल्स, हमें मिलेगा mu1 by PO प्लस mu1 by PC, mu2 by PC minus mu2 by PI. Now from the diagram, what is PO? PO is object distance. Ray is going towards right, but we are measuring towards left. Since the direction is opposite, so it should be taken negative. So object distance is minus u. PI था कि PC था, वो PC था, PC दो बार है ना, PC था, ओके PC. तो PC क्या है? PC है रे राइट साइड जा रहा है, मेजरमेंट भी राइट साइड करेंगे. PC रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा प्लस r. और PI जो होगा वो भी प्लस में होगा, ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस. तो mu1 by minus u plus mu1 by r is equal to mu2 by r minus mu2 by v हो जाएगा. तो mu2 by v minus mu1 by u is mu2 minus mu1 by r. ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, so now the other part of the surface we are considering. This side denser, this side rarer. ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बन गया नॉर्मल. यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हो, रे ऐसे गया, ये रिफ्रैक्ट हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर. सेम डेरिवेशन करोगे, सिमिलर डेरिवेशन करोगे. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, यहाँ पे इमेज. उसके बाद सेम थिंग, ये हो जाएगा, आई थिंक हमने P लिखा था, M हो गया, N हो गया, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो, तो एक बार ट्राई करोगे तो बेटर. तो दिस डेरिवेशन यू डू इट योरसेल्फ. आई एम गिविंग यू दिस एज अ होमवर्क, राइट. सो सेम जैसे पहले हुआ वैसे इसको भी डिराइव करेंगे. अब जो आंसर आएगा वो आना चाहिए mu1 में इमेज बना तो mu1 by v, mu2 में ऑब्जेक्ट था तो mu2 by u. रिलेशन आफ्टर डिराइविंग ये मिलेगा mu1 by v minus mu2 by u is mu1 minus mu2 by r. So please try and find out. So let us start with lens maker's formula now. Formula. Now you have to assume few things like lens under consideration must be very much thin
Second thing is object which is taken is very small, point sized object, angles made very small. Okay, so obviously point size image is formed. So under these considerations we are going to derive lens maker's formula. Previously we have derived relationship between object distance, image distance, refractive index and radius of curvature for two different surfaces. One was convex surface facing rarer and the second one was concave surface facing denser. So if we join both of them, we will be getting this as a lens. Now we have already derived for this half part as well as this half part, we are going to add them. तो मान लो यहाँ पे अच्छा for this surface ये होगा center of curvature C1 and for this surface ये होगा center of curvature C1, इसको ले लेते हैं C2 क्योंकि second surface है वो. ये होगा normal drawn on the first surface, तो ये होगा normal drawn on the second surface. ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे गया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली द रे इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. फर्स्ट सरफेस को देखेंगे, फर्स्ट सरफेस जब देखेंगे तो रेयर से डेंसर जा रहा है, तो सॉरी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये गया, ये जो इमेज बना, ध्यान रखो ये इमेज लेंस के अंदर ही बना है क्योंकि फर्स्ट सरफेस बना है. अब रेड डायग्राम हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते हैं तो हम कैसे ये ड्रॉ करेंगे. एक चीज याद रखोगे, ये रे डायग्राम को मैं यदि अंदर दिखाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, रे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल विच विल वायलेट द रे ऑप्टिक्स. इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल दिखाने के लिए मुझे बाहर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी में ये एक्चुअली अंदर हो रहा है. याद करो, ये जो इमेज है ये इमेज हमें दिखता नहीं है, इसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, हम नहीं देख सकते, ये अंदर बना हुआ है. द सेम वर्चुअल इमेज एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट एंड ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है. तो यदि ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है तो होगा क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल, ये जो रे है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और फाइनल इमेज जो बनेगा वो यहाँ कहीं पे बनेगा आई. इसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस. तो ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस कम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों ही, और ये हो जाएगा प्योरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. फर्स्ट सरफेस को यदि देखा जाए तो फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेरर पे, इमेज कहाँ पे है, डेंसर पे. तो μ2 बाई v डैश बनेगा माइनस μ1 बाई u बनेगा, μ2 माइनस μ1 बाई r1 बनेगा. फर्स्ट रिलेशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया था. नाउ इक्वेशन 1 है. सेकंड इक्वेशन यदि हम देखेंगे तो सेकंड इक्वेशन ये वाले सरफेस के चलते बनेगा जिसका ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर में है और इमेज जो है वो रेरर में है. तो इमेज हो गया रेरर में, ऑब्जेक्ट हो गया डेंसर में, और μ1 माइनस μ2 ओवर r2 हो जाएगा इक्वेशन 2. दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमें लेंस मेकर्स फार्मूला मिल जाएगा. ऐड करेंगे 1 and 2, हमें मिल जाएगा लेंस मेकर्स फार्मूला. अब जब ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली देख सकते हो μ2 बाई v डैश μ2 बाई v डैश कैंसिल हो जाएगा बिकॉज वी आर एडिंग देम. तो बनेगा μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u. ये बन जाएगा μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u. इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो मिलेगा μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r2. ये बना μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2. तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2. μ2 टेंसर है तो ऑब्वियसली उसको यदि मैं म्यू ले लूँ और μ1 रेरर है उसको यदि एयर ले लिया जाए तो μ1 हो जाएगा 1 एयर के लिए और μ2 हो जाएगा म्यू मीडियम के लिए, दैट इज ग्लास के लिए.
हमें मिलेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको भी लेंसमेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं। लेकिन एक चीज याद करो, यदि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, इमेज बन जाएगा फोकस पे। ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगा फोकस पे। हमें मिलेगा 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r। इस रिलेशन को लेंसमेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं।